saya claima kerai haipano bujaka tongo mal khunin joto legal documents lamao thangpai khani bagai mal khunin je documents nangmane joto tongo haipano matra berjaka tamni hunba montir okrone escort strapsa buthagi ma tongkha tangi buthagi ma tongkha khunke tiprasa khorone australian ni mal khung asomsa technical jingjal angai buthagi thangka ungkulugo tongo cm biplop kumar devne convoy eba escort asik banyo saya finish shili bujaka angel riang by obijit debarma mungoi khurne tiprasa ereng sengnai agartala circuit house amjayo asik simia ereng saya sinamui Tripura traffic police case rakha angel riang ni mungoi tei bukha tokha body ni private part dogo yak rui bukha chobjaka NCC thana wo NCC thana police cooperate khlaya obahina mangpili kasai phekya justice thani khorang tisaka TSF 3 January chiba salmari cha salo khumlung lahar kathroi homchang yagotlai lahar himbata khalaka khorang tisalaka TSF chawi mankha NCC thana wo FR khlaimani FR register ni by FR copy bo rozaglia tangai register khlaya sabni yaktong unglugo sumu asaija angel riang ni mongoi traffic police ereng case namui case rakha a case Rasan nangnai tei traffic officer Kishore boni khoboi tei khorong no terminate khane nangnai hayake financial bon dakungnai eba kotor chobawo okhlainai rakdam khlai khorang tisaka TSF nainai bidi chini mangpiliwo sing semano thanai 13 tarigo students khorongoi sini angel riang bai obijit debarma bongno je bujagmani je traffic police ni rule to bo bunani ko gya juri bo bini rule chain ka bon ba fine sanani amoroksi salangana amon sunukara totally je indigenous community ni sakawo atrocities khaimani amor tak bo sunukha je case ro register khlai jagya FIR khaimon case register khlai jagya han bai sung tini TSF or sung homchang rally mak khlai ka tambai ga ka sungamo saimono je FIR khamini ya golobo tago boro FIR no register khlaya ambai sung TSF rok tini amon bai homchang rally khlai amon sanai immediately FIR register khlaina ningthung tai loglogiwo jisini angel riang ni sako je FIR khlaira mani boro buino te FIR khlaimani amon withdraw khlaina tung thangnang tung linai singtini amon bai rally khlaitung bo salo FIR khlajak mani bo salo FIR khlajak mani 13 tarigon immediately 13 ni horo FIR khlairka tamar tini police rok boro FIR no register khlaya boro singno thungi tong am bagai capital punishment nang thung jeta je Kishore banik type 2 official je boro buman sin boro sin students je bumani aun bagai borok amo immediately sing government press ranabon immediately borok amon rom nang thung romi capital punishment nang thung tai termination bini jet job tongmani chakri tongmani bono terminate khlainan bagai sing amon tinisini demand tongo tai sing amon mani hangkake sing jora rzak ultimate time rzak a time ni mote borok gosia khaya hangkake tamukbo sing kana tino time rei borok mani hangkake amon sing one sugnai sing tam bond dawnani abo sing one sugnai future rok norok ni case already norok FIR khai register khlaijak yakho auke confirm sing thangka borok thangka rohka sing din thangka borok sino FIR copy boriya ente tabuk je norok je saka je Kishore bonik di bungoi khaijaka tai khorok ni tongo abro ke anong identify khaija man kaje apro je Kishore bonik no khogoi tai khorok ni je tongnai ro je torture khlaimani student khorok ni no sing bungmaya haikono Kishore banik ni logi two officials no je sing seven mon identify khaija man kanoro je apno je khorok ni ki amo bonus sinai Kishore banik ni sinai je bunai ni sinai boron sinai abo ente tabuk je angel development by opposite je ako mani borna ta chini da man ka ba sida chini borak no khante sida chini bujuna ro sinu Chini coba চলিকা Chini coba চলিকা সরকারি উগ্রপন্থী কিশোর বনিক গ্রেপ্তার মাখলাই নাই সরকারি উগ্রপন্থী কিশোর বনিক চাকরি টার্মিনেট মাখলাই নাই একটা coba As you all know,
that was on 13 January 2022. Two of our students, indigenous students, they were coming back from their college. On the way, their vehicle broke down for the reason that it was a machinery thing, they have nothing to do. Suddenly, it happened to be that the chief minister is also on their way. So on that particular time, the traffic police headed by Kishore Bonik and some other officials, they took the vehicle along with Angel Riang and Abhijit Devarma, saying that they have violated the traffic rules. They have taken them to the traffic office where they have tortured them in a third-degree manner. Now, what we would like to say is, the traffic police or any other police these days cannot torture physically. But this traffic police, who is the gunda of the government, they have tortured Angel Riang and Abhijit Devarma very heinously, which was intolerable, as they are also a student and member of the Tiprasa. So they have even used very slang language. They have beaten up, they have kicked them in the private parts. So this is not the way that they should torture them. And it happened that the students, the people, they have also written complaint to the NCCPS Agartala, where they have not registered the case so far. Now, these days, what is the reason that they are not accepting or they are not registering the case? Whereas, other side, the police people have lodged a complaint against Angel Riang and Abhijit Devarma, which is totally opposite. Now here, if the police personnel, if the police station does not register the case of the Angel Riang and Abhijit Devarma, by tomorrow 3 p.m., the TSF, the Tiprasa people as a whole will go for a greater Andolan. We may be starting with a 12-hour ban on the 17th, that is Monday. And in spite of that, if the government is not ready to cooperate with us, we are going for a further greater movement, which they should feel that this particular Kishore Bonik, he used such words that which is likely to bring communal tension between us, and this also he also used that tribal hai, these people are tribal, kicking on the private parts. So this is very intolerable to the indigenous people. So this also falls under the ST Atrocities Act 1989. So the officials, Kishore Bonik and others, should be punished, and they should be terminated from their job. They should be punished under the ST Atrocities Act. So we appeal to the people of Tripura, be with us, join hands with us, because this is not the first day that police personnel and many other people are torturing us. So we are not going to tolerate anymore. Now, if they don't register the case by tomorrow 3 p.m., we are going to call 12-hour ban, whole Tripura 12-hour ban, which may be followed by indefinite strike and other types of movement. जों particular sections जों mention खाया तम खामो पुलानो ST Atrocity Act लायो आबो हंगाखाय जों आरो साइका
ST Atrocity Prevention Act 1989 आ जगह ST रंगनो नों even mockery खाई even bono bengai खाई abon against a point case in man then one of false case खाई जे ST रो punishment मांग खाई abon proof खाई मांग खाई जे false case नहीं abon double punishment बरो माना कलाई abon bagai sentini adino seng abono saka abono sikya je ST Atrocity खाईजांग मनी aboni ego mono punishment ni saka second hinga kai oma hatred racism je particularly ST no nai borok oma hake action naman thirdly hinga kai oma totally human right violation the bini attempt to murder aba intention tongu karon tam na bagai police traffic police ni processor no kuno ain krui je bono যে কোনো ট্রাফিক ভায়োলেটর ন তলাঙৈ বনো পানিশমেন্ট রন্দানে কিবা বনো অফিসে তলাঙৈ অমাকে 3 ডিগ্রি টর্চার খাইনান ট্রাফিক পুলিশ ni samung tamo tai bong ain tamo hingkakai je traffic rule no mania bono fine khai chalan tani bono rohana simisi abuni beyond that kun action nai mi hingka judino nang kono punishment rimalia bono chalan card khai malia bono tharifan thangka hingkakai bono gari ni against kiba bike ni number se against borok abo cash khai kuto roho nga kut ni hoita notice thangi soguyu amo pore bo a notice tubui kuto phai bo je fine charge khaimene abna ruoi bo thangi payu aba hekeno case accountant ni thang kento jakha chingta munu kha chief minister ni gari thang tongo ga bor buska nga tabo to electronic gari boro actually nervous sangai abo gari top gear roba boro abo obungjak thangka asuk bai to boro no punishment no kok kari haipan boro side khai boro gari na pass khai rohaka abo ni yaglo point se bono office talangai traffic office iko astobal lik somni gana talangai omba heke 3 degree torture khaika tai plus a jaga boro language use khaika jeta norok tribal no bui betapa no ke bo nugia na aba heke sajak ka angka abono tei no seng a jaga bo seng point rakha ST Atrocity Prevention Act abono invoke khai abono section of bono punishment ri ta kaisa ka bo intentions je human right violation racism je discrimination khai identify khai oba ke 3 degree torture khai mani abono action na karon obo to attempt to murder abono bagai tini seng nayo seng ultimate time rakha bono 3 days in bisungo যদি না কোনো অ্যাকশন নাই আকা কোনো এফআইআর খায়া আকা আপনি বিল করপনো নেক্সট স্টেপ কোর্স আবশ্যক কাজা মানে সারা কেন তাবুক জরা বড় কেস রেজিস্টার খায়া তাবুক কাইসা যে কোনো কমপ্লেইন রাখাং কাকা ইভেন এসএমএস বাই নং রহ কাকা পুলিশ ন আ উসি ব ইট ইজ বাউন্ড টু মানে অ্যাকসেপ্ট দ্য এফআইআর কেন তিনি বড় রিটেন হই ইভেন পুলিশ রক সাইমানো যেটা বড় ন ফিজিক্যালি যে 3 ডিগ্রি টর্চার খাইবেন অবস্থা লিয়া abono bisingo point por abono FIR khaya kaba ko bela ke mane intention to ta kaisa sing obo sanamu sungo x-ray khaika x-ray report mangkha a jagao sing bini seso sport manja kha bini khangara robon tongmai kha tai bini je unko test jo je bor lathir mani litok to je lathir mani duiba lathir kha bo arona patap sangai lagi bo klai kha aga abone action tini সিটি স্ক্যান বা খাকে সিটি স্ক্যান রিপোর্ট তাবু মাইনা খো থাঙ্কা আদিনো 1 ঘন্টা ni bisung rena khok 1 ঘন্টা ni bisung ria second daw থাঙ্কা renai hunka dupro renai hunka dupro bo থাঙ্কা dupro maya tar mane miyawo sarigo bo থাঙ্কা sarigo maya ko tini dupor jora a report maya ko a borom bono thangi na hadi ni rohka tabu jora maman kamaya saime ko khobor maya ko abun intention tama tar mane bo ekdom critical bo injury kha অবয়া আসল খাইমানে তাবো লাগা পুলিশ প্রশাসন কিবা হোম ডিপার্টমেন্ট বনে অ্যাকশন নায়া বিন ইন্টেনশন তামো কা আ জাগানা নুকজাগো অব পুরা রেসিজম তাই ST Atrocity খাইজাখা আবন বাগে চিন্তিন অ্যাকশন নাই I would just like to explain or tell to the Northeast people and the entire nation that how the indigenous people of Tripura has been assaulted
by traffic police is a very, very unique case that where you will find in India. It is not possible for the traffic police to act such a heinous act. But today we have witnessed in Tripura that the traffic police, they took them to their office and they have tortured them with physical, and they have tortured them with racism word, with racial discrimination word, and with so many slang language that they have used to our. So this is definitely under the ST Atrocity Prevention Act 1989. So we have also filed an FIR against those traffic police, but till today the police did not accept the FIR. So we are warning, or we are urging the traffic police and the police department to register against those perpetrators and punish as per the law. And if till tomorrow, we have given deadline till 3 p.m. In spite of the deadline, if the police are not taking action against the perpetrator, then we are calling Tripura Bond on Monday. And even after calling bond for 1 day, even after that, if the police are not taking action, then we will have a further course of action. So this is what we would like to tell. We have cooperated the police in a very gentle way, in a very polite way. We have cooperated to bring the peace and harmony in the state, but police seems to be not respecting our request and our appeal. So therefore, it is intolerable from the indigenous part, and we would like to request all the citizens of Tripura people, whether it is indigenous people, whether it is non-indigenous people, every citizen of Tripura, we would like to request them to come and support in solidarity with us, and let us ask the Tripura government to take action against this perpetrator. And if they are not taking, then let us all unite together and fight together for this injustice done to the innocent students. Thank you. मालूम है, कल सोशल मीडिया में सब जगह में आप लोग देखा होगा शायद, जो 13 जनवरी में टिप्रासा इनोसेंट स्टूडेंट को इक्फाई में जो पढ़ रहा है, 3rd ईयर का जो पढ़ने वाला एंजल रियांग और अभिजीत देबर्मा को, जो उसमें बेवजह ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिस में लेके इतना मारधोर किया, उसका प्राइवेट पार्ट्स मतलब पूरा शरीर में वो लोग अटैक किया है, मतलब और भी जो मतलब वो क्या है। तो आज देखिए ये ऐसा मतलब ऐसा नहीं चलेगा। कौन उसको अथॉरिटी दिया, कौन उसको ये पावर दिया है, जो ट्रैफिक पुलिस, जो किशोर बोनिक, जो हम लोग के इनोसेंट स्टूडेंट को वो मार सकता है, कौन उसको अथॉरिटी दिया है? ये देखिए, ये ऐसा गुंडाराज नहीं चलेगा, गुंडाराज नहीं चलेगा। ये त्रिपुरा है, ये उसका बाप का घर नहीं है, ये उसका राज्य नहीं है। ये आज त्रिपुरा लोगों को ये ऐसा पीटना मारना, ये हम कभी सहन नहीं करेगा। TSF त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन, अगर वो लोग ये स्टॉप नहीं करेगा, और आप लोग कल भी मालूम होगा, हम लोग ने 13 नाइट में रात में हम लोग FIR कॉपी भी दिया था जो NCC पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो लोग रजिस्टर नहीं किया अभी तक। फिर भी अगेंस्ट में जो विक्टिम जो मारपीट हुआ है, जो मारपीट खाया है, एंजल और अभिजीत का अगेंस्ट में वो लोग एक केस डाला था जो ट्रैफिक पुलिस ने, लेकिन वो लोग ये केस रजिस्टर कर लिया, लेकिन हम लोग जो पिटाई खाया, जो मारपीट जो खाया है, जो उन लोग का मतलब उन लोग का FIR वो लोग अभी तक रजिस्टर नहीं किया। हम बोलना चाहते हैं त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुलिस प्रशासन बोलते, अगर अभी तक उसको कल 3 बजे तक वो केस रजिस्टर नहीं हुआ, तो हम TSF मांडे में 12 आवर के लिए बंद बुलाएगा, और त्रिपुरा में और भी ये मूवमेंट होने वाला है। ये हम कभी सहन नहीं करेगा, ये गुंडाराज नहीं चलने वाला। हम CM को भी बोलना चाहती है, त्रिपुरा का CM को भी बोलना चाहती है, ऐसे ही आप सिखाया क्या? ऐसे आप सिखाया आपका जो ट्रैफिक पुलिस को, ये कानून किसका हाथ जा रहा है? अभी गुंडाराज चल रहा है। अगर ये उधर नहीं हुआ, अगर जो
जो किशोर बोनिक और दो तीन जो ट्रैफिक ऑफिसर है, अगर उन लोग को पनिशमेंट नहीं दिया, अगर टर्मिनेट नहीं किया, तो हम लोगों का देखिए त्रिपुरा में और भी बहुत कुछ होने वाला है। और हम चाहते हैं उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा और पानिश एग्जाम्पल पानिश देना भी होगा। ये TSF का डिमांड है। और दूसरा बात है जो उसका जो हमारा ओवीसी देवबर्मा और एंजल का अगेंस्ट में जो केस हुआ है उसको विथड्रॉ करना है विदाउट कंडीशन, बिना कंडीशन में उसको केस विथड्रॉ करना है। ये हम लोग का डिमांड है। लेकिन यहाँ पर तो जो ट्रैफिक को जरूरत नहीं आइडेंटिफाई करने के लिए, वो लोग आइडेंटिफाई करेगा कौन पीता है, कौन ऑन ड्यूटी में है, वो गवर्नमेंट देखेगा, वो पुलिस प्रशासन देखेगा। हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है कौन कौन ड्यूटी में है, ये तो उन लोग मालूम है। हमको क्यों मालूम होगा ना, हमको क्यों मालूम होना चाहिए। किशोर बोनिक है, ऑन ड्यूटी में कौन है वो लोग मालूम है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय का टाइम में कौन है वो लोग आराम से वो निकल सकते हैं। हमको जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं वो पनिशमेंट होना चाहिए, उसको टर्मिनेशन होना चाहिए बस। अब लोग जो केस रजिस्टर किया है उस टाइम में ट्रैफिक पुलिस किशोर बोनिक उसके अगेंस्ट में जो केस फाइल किया है आप लोग, तो उनका साथ कितना आदमी के लिए आप लोग ने केस रजिस्टर किया? किशोर बोनिक और साथ में और 3 है, 4 है टोटल।